चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी ब्लू स्टार के बारे में और कंपनी का जो 2023 का आउटलुक है या बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें हम बातचीत करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी त्यागराजन जी हमारे साथ है। त्यागराजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2023 में बहुत सारे हम लोगों ने 22 में चैलेंजेस देखे। इन्फ्लेशन का प्रेशर था, कमोडिटी प्राइसेस थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन डिमांड, रूरल, ये सब बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई। 2023 कैसा लग रहा है आपको? It's a pleasure talking to you, Neeraj. It is wonderful. Actually, I am as optimistic as I have been about 2023. 2022 was a fantastic year. 2023, I see demand from B2B as well as B2C segments for us. Okay, तो B2C या B2B में अच्छी ग्रोथ हुई 2022 में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अभी कई कंपनियों के बिजनेस अपडेट से दिख रहा है कि महंगी ब्याज दर का असर पड़ रहा है, कंज्यूमर लोन पे भी पड़ रहा है। तो क्या ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट का जो चैनल है ये वाइट गुड्स के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहा है? Neeraj, on the contrary, I am very impressed with the optimism that I see in tier 3, 4, 5 towns where we have more than 65% of the business coming from. So the people are optimistic. The shops are crowded. You are seeing all around. The airlines are crowded. Hotel is crowded, and there is the demand for our products continue to be good. Whether it is room air conditioners or commercial refrigeration products or the larger systems for infra manufacturing data center, it continues. त्यागराजन जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपकी बातचीत सुन के लग रहा है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाइप के जो छोटे छोटे शहर हैं या रूरल इलाके हैं, जहां पे अब वाइट गुड या एसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है, लेकिन वहां से डिमांड नहीं आ रही है। ये बहुत सारे आप FMCG कंपनीज के अपडेट देखिए या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वहां पे, कैंटार जैसी कंपनी, उनसे बात करिए तो उनका मानना है कि अभी डिमांड या तो एकदम स्टैटिक है या नहीं हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर ये डिमांड मतलब असर क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों के बिजनेस में इसका? Valid question and valid concern. It is true that the rural population are not connected to the supply chain as a whole. The consuming public are very limited. We may say our population is 1.3 billion. Some 300 million are the consuming base. That's where we are. But by the same score, it is also giving me the optimism that the penetration level for room air conditioners is just 7%. So there is enough headroom for room air conditioners to grow. So that's where my optimism comes from. The second one is agriculture income has been good, and we are seeing demand coming back from rural markets as well. The third is massive infra spend by the government and public sector and the private sector in manufacturing data center, that is keeping the demand for B2B products high. So this is where we are coming from. And look at it, the air conditioning industry itself is small, and on that small base, the growth happening is inevitable, right? That's where we are. Of course, there are many other factors which we will have to look into, like whether the global recession will catch up with India. I am not an economist. I am seeing on the ground demand holding. Building up to the summer, dealers are beginning to stock. And so we are preparing for a great summer season ahead. Okay, तो एक बहुत ही निश सेगमेंट है, छोटा है, इसलिए शायद कोर पे उस तरह ग्रोथ आ रही है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन त्यागराजन सर, ये बताइए कि 2023 में प्राइस की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, बावजूद इसके कि कुछ जगहों पे कमोडिटी प्राइसेस नीचे हुए हैं और कुछ जगहों पे
अभी स्टैटिक कह सकते हैं, प्री कोविड लेवल पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले नीचे आए हैं। आपने 2022 में अपने बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जरिए कोई प्राइस हाइक नहीं ली थी। इस साल 2023 में कैसा रहेगा प्राइस का सिनेरियो? We have decided not to increase the prices. The commodity prices softened, but whatever savings we would have had, that is eaten away by the rupee depreciation. The supply chain ecosystem in India is still evolving. So the air conditioning industry will have to depend on imports. So this burden of depreciating rupee is not making us look at any kind of a price revision downwards. Now, will the prices have to be increased upwards? I don't think so. You have to play between what is the demand and what is our market share goal. The pricing is determined by the competition, and I think we are better off today in terms of pricing. And most importantly, moving to the summer season, quite a few products are getting launched, which are in line with our strategy to introduce affordable premium products. So therefore, we have made the products competitive and somewhat protecting the margin. You have seen our margins during the first couple of quarters. There had been an erosion of around 1.5%, and I think we will have to live with it now. But in Q4 and summer season, we have quite a few levers to improve the margins. Basically, because Blue Star Climatic and Sri City will come on stream, the scale advantage itself is benefiting us. Lastly, I am seeing if the global demand is coming down, there should be some kind of softening of prices of components further. इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी प्रॉज एंड कॉन्स के बीच में आप प्राइसिंग कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी मतलब काबिलियत है कि आप इसके बावजूद प्राइस हाइक नहीं ले रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि मार्जिन मेंटेन करेंगे डिस्पाइट बहुत सारे सिनेरियोज के। त्यागराजन जी, ये बताइए कि आपके 3 सेगमेंट में आप काम करते हैं, एक रूम एसी है, एक कमर्शियल है और एक हैवी कमर्शियल और एक एंटरप्राइज सर्विसेज। अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से किस में सबसे बढ़िया ग्रोथ दिख रही है? Right now, all the three are doing well. It is room air conditioners, commercial refrigeration products, which are deep freezers, cold chain related for management of perishables or pharmaceuticals, and in the infra space, the airports and metro railway, data centers, manufacturing. So the order book itself is huge, rupees 4,000 crores or so at this point of time. त्यागराजन जी, आपने कहा कि यूरोप में और दूसरे देशों में, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी मंदी है, वहां पे थोड़ा सा डिमांड घट रही है, उसके बावजूद आपने नीदरलैंड में एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश की है, इसके बारे में बताइए सर। Yes, we have opened offices in United States as well as Europe. So there is a subsidiary in North America as well as Europe. This is in line with our strategy to expand our global footprint. So we are doing well in India. It is time for us to grow our international footprint. We have been strong in the Middle East. Now we would like to enter Europe as well as North America in line with China plus one strategy. Because global OEMs are looking for sourcing material from other destinations than China. So therefore, we think we have an opportunity there. सर, आखिरी क्वेश्चन, हम लोग बजट के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं, और अगर वित्त मंत्री निर्मला जी के सामने आपको एक अपनी डिमांड रखनी हो, क्या होगी वो? I have been staying away from demands such as some concession from here, there, etc. As long as it is a growth-oriented budget for nation building, I think we will invariably benefit. After all, the government has to balance the fiscal deficit as well as revenue deficit. So we are with them in that. Now, the component ecosystem in India has not yet matured.
thanks to the PLI scheme, many investments are taking place. It will be 18 months before those components are available here. In the meanwhile, I think there should be stability in terms of custom duty for those components, because we all have invested in a big way in building the capacity for air conditioners in India. The components you have to import, therefore, if they can keep the custom duty on components, fine, we will be happy. But eventually, it's a level playing field. If it is going to increase for us, it will increase for everyone. See, at the end of the day, the market will have to grow. Every one of us will flourish. For the market to grow, you cannot keep on increasing the prices. Something due to custom duty, something due to energy labeling, something due to global warming or the ozone depletion. So the air conditioning industry has been upgrading the technology every couple of years. And we have gone ahead and invested. For your information, the capacity in the country will double within another 18 months. And thanks to the PLI scheme. So the domestic demand will have to grow, therefore the products must be made affordable for the people. So one request is whether the custom duty can be kept unchanged. That's where we are. ओके, तो ये थी ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर त्यागराजन जी की विश लिस्ट जो वो वित्त मंत्री जी से चाहते हैं। त्यागराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और 2023 के आउटलुक को हमारे दर्शकों और आपके इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक।